हाय गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर शार्क्स पॉडकास्ट। जब मैंने डेंटिस्ट्री छोड़ी थी तो अच्छे के लिए छोड़ी थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डेंटिस्ट मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट बन के आएगा। बट तन्वी इज नॉट ओनली अ डेंटिस्ट, तन्वी इज अ ऑथर हु राइट्स बुक्स, हु डज कॉपी राइटिंग एंड इज इनटू वर्ल्ड ऑफ राइटिंग। सो लेट्स जॉइन तन्वी फॉर दिस कन्वर्सेशन। तन्वी, गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi everyone. Thank you, Dr. Naresh, to invite me on this podcast. So I am a dentist, but I am also a writer. I'm freelancing since 2020 because suddenly I was doing a job before 2020, but then suddenly everything got shut down and every dental clinic in my city was shut down because we dentists were at the highest risk point for COVID-19. So suddenly I had no job, no income, and I had to find another way, to sustain. And that's when writing appealed me because I was already writing as a hobby, poems, short stories, fiction. I just didn't know I could earn from writing online. That I did in 2020, and since then I've never looked back. I love writing. I'm doing it part time right now. So let's see where it goes. यस, तन्वी ने रिसेंटली ट्वीट किया था। उसने उसमें लिखा था कि अगर आप फुल टाइम भी एक करियर को परस्यू कर रहे हो, एक कंजर्वेटिव प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हो, अगर आप अपना टाइम मैनेज करोगे तो अपना आप साइड हसल इस्टेब्लिश कर सकते हो। ऑल्सो डॉक्टर शाह के पॉडकास्ट पे मेरा एम है कि मैं लेजिट लोगों को बुलाऊं जो इम्पोस्टर्स नहीं हैं, जो जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पे अपनी पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तन्वी क्रिएट कर रही है वैल्यू वाया हर राइटिंग। But Tani, I would like to know, is this your passion or is this an opportunity you saw because of the lockdown to create a side hustle for yourself? Because it takes a lot Writing of was, courage for us yeah. doctors। वो जब डॉक्टर का टैग लग जाता है ना, तो उसके बाद कुछ जब हम और करने की कोशिश करते हैं या ऑल्टरनेटिव करियर चॉइस करने की कोशिश करते हैं, तो लोग बोलते हैं यार ये क्या कर रहा है, यार ये पागल है, यार तू क्या सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं है क्या, यार तेरा क्या इंटरेस्ट नहीं है क्या Yeah. इसमें, यार ये फादर के डोनेशन की वजह से डॉक्टर बना। ठीक है। सो how did you find the courage first of all to create a side hustle which is not related to medical profession, and is this because of your passion or you are just good at it, या तुमने अपॉर्चुनिटी देखी कोविड के टाइम पे, क्योंकि काफी सारे लोग सब ऑनलाइन आ गए ना, ऑनलाइन उन्होंने कंटेंट क्रिएशन करना चालू करा। So writing तो already passion था मेरा first. Like since childhood I was writing poems here and there. I was entering my poems and short stories into competitions, and I knew I had some flair in writing, but I didn't know this concept of content writing, digital writing, earning online, by being consistent on LinkedIn and Twitter. I didn't know this exists. क्योंकि मैंने कभी डेंटिस्ट्री से आगे जाके कुछ और एक्सप्लोर ही नहीं किया. आई ऑलवेज वॉज डीपली इन्वेस्टेड इनटू डेंटिस्ट्री ओनली. But pandemic gave me that opportunity, gave me that time to explore new options for me. And yes, I saw many other options. I also saw some options as non-clinical work from home jobs as a dentist, right? But writing appealed to me because I was like, okay, I already write for my own. I already write as a hobby, so this could be a good, uh, let's try this. I was not like, okay, mujhe earn karna hai or something like that. I was not very serious about it in the beginning. I was just like, okay, I have the time right now. और वैसे भी कोई इनकम है नहीं अभी, so let's try this one thing because I already knew some of my dentist friends, they were doing medical writing and earning on the side. So I knew this is a thing I could try. And since writing was my passion, it felt like an easy option to try it. And that's how I think I started. Yeah. ऑडियंस में जो बिगिनिंग कर रहे हैं, बिगिनर राइटर्स हैं, उनको बताओगी कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स पे पहले अपने वर्क को या अपने स्किल को प्रमोट करना चालू किया? I first started
from LinkedIn. I was very, very consistent on LinkedIn. Like I didn't know what a niche is. I didn't know this word, niche. I didn't know anything about content writing or any techniques, any technical aspects, nothing. I just tried it because I saw a creator doing that and she was doing it very well. So I just followed her footsteps. I observed her writing. I observed what she was doing, what she was posting, and I just started my own thing on LinkedIn. Hmm. So in the beginning, I even posted some creative fiction pieces, like a fiction dialogue between paper, pen, laptop, and mobile. So it was nothing like what we see on LinkedIn generally, like about HRs, about jobs. It was nothing related to that. It was just a fiction piece I wrote in my free time, and I posted it. It was appreciated. Like it was my highest, appreciated post back then. So I enjoyed it in the beginning. But then I also knew कि अगर मुझे clients चाहिए, then I should know the technical things. I was just posting like I was just trying different things, but I didn't know what should I post to actually get clients. तो फिर मैंने बाकी creators को देखा, उनसे सीखा. There are many free resources online, तो उनका पूरा use किया. And with practice, I gradually, understood the game of LinkedIn, how to get clients and all. And fortunately, वो हुआ. यस, तो तन्वी की नीश क्या है? देखो, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल अंडर राइटिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन तो कम्स नेचुरली टू यू, ओके, बिकॉज तुम्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का सारा पता है. मुझे भी पता है कि बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं वो जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं उनके लिए काम करते हैं, ओके. तो यू टेल मी कि तुम्हारा नीश क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सिर्फ हेल्थ केयर डोमेन में काम करती हो, या तुम किसी टेक कंपनी के लिए भी लिख सकती हो, या तुम किसी क्रिएटिव पर्सन के लिए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी लिख सकती हो, या तुम सिर्फ जो क्लिक टू एक्शन वाले एड्स होते हैं तुम वो भी लिख सकती हो, तो तुम एग्जैक्टली क्या लिखती हो? व्हाट इज योर नीश? I started with medical writing. I used to write articles related to healthcare and medicine. I also wrote, medicine descriptions for companies like PharmEasy. And but on the side, I was also trying some new things. Like I also wrote a free article for someone in finance because I didn't have any experience. I needed that experience, so I wrote it for free. uh, I also wrote something in lifestyle that also for free. तो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आई रियलाइज्ड कि ओके मुझे नॉलेज है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन का, बट आई डोंट एंजॉय राइटिंग अबाउट इट फॉर अदर्स बिकॉज ऑलरेडी मेरा मोर देन हाफ ऑफ द डे मेडिसिन में जाता है, हेल्थ केयर में जाता है, बिकॉज आई एम अ डेंटिस्ट. अगर मैं राइटिंग कर रही हूँ तो आई वॉन्ट समथिंग एल्स. आई वॉन्ट to do, like I don't want to get bored writing. मैंने एक्चुअली ये स्टार्ट किया बिकॉज आई लव राइटिंग. तो अगर मैं हेल्थ केयर में लिख रही हूँ और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोर हो रही हूँ, देन देयर इज नो पॉइंट. तो आई इवेंचुअली लाइक बहुत एक एक डेढ़ साल गया मुझे ये रियलाइज होने में कि आई लव राइटिंग इन लाइफस्टाइल, about productivity, about mental health, about even I have wrote fiction ebooks, not short ebooks around fiction. Like मैंने एक ebook ऐसा भी लिखा जिसमें आई हैव रोट अ स्टोरी लाइक अ डिज्नी काइंड ऑफ स्टोरी. जैसे डिज्नी की मूवीज की स्टोरीज होती है, प्रिंसेस प्रिंस होता है, कोई विलन होता है, विच होती है, तो वैसी एक स्टोरी भी मैंने लिखी है. So I love writing fiction. I love writing up in everything about lifestyle, be it entertainment or beauty products or mental health, anything. But I don't write like in a core healthcare niche. Like I don't write about medicines and all. I write about the broader stuff, the productivity, mental health, such kinds of things. Okay. Sorry. Where do you derive your inspiration from? You read a lot of books,
यू वॉच लॉट ऑफ मूवीज। ओके, तुम्हारा कोई फेवरेट ऑथर है, फेवरेट क्रिएटर है, या तुम ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ लिख लेती हो? तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या है लिखने के लिए? बिकॉज हेल्थ केयर का तो तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है, बाकी सारी या चीज़ों का तुम्हारे पास मतलब बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उन सेक्टर्स में। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है फिर? यस, आई लव राइटिंग। मैं बहुत पढ़ती हूँ, लाइक बी इट अ फिक्शन स्टोरी, अ नॉवेल और नॉन Hey फिक्शन। guys, this video is sponsored by Rapid Scaling System, the fastest method to generate quality leads. So if you are an online business owner and want to scale up your business, click on the link in the description below to learn 9 different strategies to generate quality leads and scale up your business. और नॉन फिक्शन। पहले से, बचपन से मुझे बहुत पढ़ने का भी शौक है। आई रीड अ लॉट। That's one kind of inspiration, if you can say it. My favorite creator recently, it keeps changing as I discover new creators. But as of now, it's Niharika Kaur Sodhi. She's a She writes in similar niches as I write, and she's grown her business like quite impressively, and it's something I imagine myself to be doing in somewhere near future. So I read everything that's posted by her, like everything she publishes, I read it, be it on Medium, on Twitter, or on LinkedIn. But right now, she is my favorite. Yeah. सपोज करो तुम वहां से ज्यादा कमाने लग गई तो डेंटिस्ट्री छोड़ दोगी? Many people ask me that, but right now it's a quite difficult uh, choice. So I cannot choose right now. Let's see where it goes. ओके, तो मेरा सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है तुमसे ये है, अभी एक न्यू फिनोमिना चल रहा है ऑनलाइन, वो है चैट जीपीटी। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर पहले मुझे अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइज करवाना था या अपनी पर्सनल ब्रांड के बारे में पैसिव आर्टिकल्स लिखवाने थे, तो मैं तुम्हारी हेल्प ले सकता था। अब मैं चैट जीपीटी को रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो भी मेरे लिए सेम काम कर देता है। तो व्हेन दिस एआई इज कमिंग इनटू द मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू फील थ्रेटेन्ड बाय इट कि यार फिर क्लाइंट मेरी मदद क्यों लेगा, है ना? अगर थ्रेटेन्ड नहीं हो तो क्यों नहीं हो? uh, I've read so much about ChatGPT. Like on Twitter, every other creator was posting about ChatGPT since it launched, and like many blogs and all. I also read that. But I never felt threatened by any kind of AI. Maybe because I have a thinking pattern. I think very deeply about things, and I think that's why I could write well. And no matter how great your AI is, uh, it cannot think like a human, because on if आप और मैं एक ही टॉपिक के बारे में अगर सोच रहे हैं, it's not necessary we'll be thinking the same thing. Our thinking patterns are very different. From human to human, it keeps changing. तो अगर एक बिजनेस आपको कोई टॉपिक पे लिखने को कहे, you may write the similar facts as I would write it, but your thinking process will be different from mine. तो अपने आप में हम दोनों के जो भी राइटिंग पीसेस होंगे वो सिमिलर टॉपिक पे रहेंगे, बट इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस, इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लो, इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस, टोन इन राइटिंग। ये सब डिफर होता है बिकॉज वी थिंक डिफरेंटली। पर्सनैलिटी अलग है। राइट। हम्म। और एआई वो नहीं कर सकता। सो मे बी अगर मैं कोई टॉपिक पे लिख रही हूँ तो फैक्ट्स मैं भी वही लिखूंगी जो चैट जीपीटी देगा, but that AI cannot think like me, and that's where my part becomes more powerful, because I can include my voice, or more importantly, I can decipher the brand's voice and include it in the writing piece. I think that's where AI and humans are still different and are always going to be different. That's always going to be a limitation for an AI. So I think that's why I never felt threatened by any kind of AI.
क्या तुम उसको एज अ असिस्टेंट यूज करोगी टू गेट थिंग्स डन क्विकली फॉर द क्लाइंट? ऑफ कोर्स, लाइक बहुत सी चीजें हैं जिसमें टाइम बहुत सेव होगा, चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो. So yes, it can be used, but it can never replace a human. I don't think so, at least. Okay. So, guys, before we move to the final googly question for Tanvi, we will be running her credentials throughout the edits of this podcast. Also, if you want to get your dental treatment anywhere in New Bombay, you can contact Tanvi on her official email ID and she will reply to you with respect to what treatment you should go for and at what timings and what appointments. Tanvi, final googly question. अगर मैं तुम्हें टाइम ट्रैवल करने की एक अपॉर्चुनिटी दूं तो तुम Hmm. कौन से एरा में जाना चाहोगी? किसको मिलना चाहोगी या कुछ चेंज करना चाहती हो या डेंटिस्ट्री नहीं करोगी? क्या करना चाहती हो इफ यू वांट टाइम, अगर मैं तुम्हें टाइम ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी दूं तो? Very tricky question. ओके, अगर मुझे टाइम ट्रैवल करना हो तो मैं डेफिनेटली पास्ट में जाना चाहूंगी, बिकॉज आई लव हिस्ट्री. और मैंने जितनी भी हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स पढ़ी है या जो भी कुछ पता है मुझे, आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ बींग मोर एंड मोर क्यूरियस अबाउट थिंग्स. So, for example, Subhash Chandra Bose ka death and all of that stuff is very uh, कॉन्स्पिरेसी थियरी? mysterious. Mysterious है अभी भी, so I would like to know more about it. ऐसी बहुत सी चीजें हैं. So yeah, I would like to go in the past only. अमेजिंग. Dentistry, I would do dentistry because past में जाकर अगर writing online तो possible नहीं होगा, because I will be in the past. So I think dentistry. Yeah. Amazing, amazing answer. So, guys, this was Dr. Tanvi. Now, I give opportunity to Tanvi to promote herself, to promote her skill set. And if you want to connect organically with her, you can just DM her on the credentials that we are displaying right now. Tanvi, go ahead and promote yourself. After that, we'll wrap it up. Hi everyone. So far you know most of the things about me, but what I didn't mention is uh, I love teaching, and I am a shy person, so I may not be comfortable teaching a group of 50 people in a room, but I love teaching one-on-one. I love sharing my ideas. So if anyone who is looking to write, uh, looking to earn from writing online, or looking to uh, establish their career in writing, or anyone who is curious about writing on LinkedIn, Twitter, I have a few free consultation slots in this month. So you can DM me on Twitter. We can have a chat. Yeah, and it's free, no charges paid. So, guys, this was the episode for Dr. Shark's podcast. If you love this episode, if you gain 10 to 15% value from this episode, do like, subscribe, and share my channel. And follow Tanvi on different social media platforms for writing work, to see her work, and to connect with her organically for collaborations. Bye. Take care.